Hello students, welcome back to MKH video series. My name is Aditya and in the previous video we have successfully completed exercise 9.3 up to question number you can see 12th, right? Now in this video we are going to move further. That means we are going to discuss question number 13, right? Now in question number 13 this figure is given. Now let me just read the question here that ABCD is a trapezium with AB पैरेलल DC. सो यहाँ पे हमें गिवन है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें AB जो है वो किसके पैरेलल है, DC के. नाउ अ लाइन पैरेलल टू AC इंटरसेक्ट्स AB एट X एंड BC एट Y. सो आप देख सकते हैं एक लाइन जो है जो पैरेलल है किसके, AC के, which intersects AB at X and BC at Y. सो आप देख सकते हैं ये जो XY है, ये जो लाइन सेगमेंट है वो पैरेलल गिवन है AC के, राइट? सो आप देख सकते हैं एक लाइन जो कि पैरेलल है AC के, जो AB को X पे इंटरसेक्ट कर रही है और BC को Y पे इंटरसेक्ट कर रही है, राइट? दैट इज XY. नाउ दैट मींस इट इज गिवन दैट XY इज पैरेलल टू AC, राइट? देन you can see we have to prove that area of ADX, right? So आप देख सकते हैं इस X को मैंने D से ज्वाइन कर दिया, X को C से ज्वाइन कर दिया, right? Then you can see there is a triangle which is formed here, that is ADX and is equal to the area of triangle ACY, this triangle, right? So हमें प्रूव करना है कि ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया जो है वो इस ट्राइंगल के इक्वल है, right? So how we will prove this? Let me just first start off with the given thing, right? So starting off my solution here. So the given thing here is, you can see that ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD. That is given here. Sorry. So यहाँ पे AB जो है वो CD के parallel given है. Then also you can see XY is given parallel to AC. Also XY is given parallel to AC. So you can see this is given in the question. Now talking about to prove. So you can see here what we have to prove is area of triangle ADX is equal to the area of triangle ACY. So you can see ADX, this triangle, and ACY, this triangle, right? So इनका area हमें क्या करना है, equal prove करना है. So how we will do it? Let me just start off my proof here. So the first thing that you will notice here is, you can see if you just observe this diagonal AC of the quadrilateral ABCD, right? So अगर आप ध्यान से देखें तो इस diagonal के ऊपर दो triangles form हो रहे हैं, that is ACX and ACY. So आप इन दोनों triangles को देख सकते हैं. So ये AC diagonal के ऊपर ही बन रहे हैं. You can see ACY and ACX, right? Now both are on the same base as well as between same parallels, XY and AC, because we know that XY is parallel to AC. So that means इन दोनों triangle का जो area है वो क्या हो जाएगा, equal हो जाएगा with the property, right? So starting off my solution as in figure, you can see triangle ACX and triangle ACY lie on same base AC and between same parallels XY and AC, right? So we can write that area of triangle ACX is equal to the area of triangle ACY, right? So let me just give it equation number first. Now further you will again find out that also this ACX, this triangle here, is also equal to the area of triangle ADX. How? Because हम देख सकते हैं ये AX जो बेस मान ले अगर यहाँ पे, so इस बेस के ऊपर दो triangles बन रहे हैं, that is ACX and ADX. Now that means कि ACX जो है वो ADX के भी area के equal है. So let me just first make some space above. So let me just write down. Also you can say that area of triangle ACX is
अगेन इक्वल टू ADX। आप देख सकते हैं ACX और ADX दोनों AX बेस पे बन रहे हैं एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स AB एंड CD, राइट। सो दैट मीन्स दैट इज ऑल्सो गिवन हियर कि AB जो है वो CD के पैरेलल है। दैट मीन्स ये बेस AX के ऊपर ये जो दोनों ट्राइंगल्स बन रहे हैं इनका एरिया भी क्या हो जाएगा, इक्वल। सो दैट मीन्स दैट ऑल्सो एरिया ऑफ ACX इज अगेन इक्वल टू, यू कैन सी, ADX, right? So यहाँ पे ADX के इक्वल हो गया ACX का एरिया। Now let me just give it equation number second. Now if you just observe from equation number first and second, so that means कि जो ADX और ACY दोनों किसके इक्वल है, ACX के इक्वल है, यानी कि ये दोनों सेम चीज के इक्वल है। दैट मीन्स आपस में भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, राइट। सो वी कैन राइट डाउन दैट फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड we have, so हमारे पास क्या आ जाएगा, आप देख सकते हैं that we will get ADX equal to ACY. So that will be that area of ADX is equal to the area of ACY. Right? Now you can see here, this is what we have to prove in the question. So as now we have got that ADX is equal to ACY, and this is what we have to prove in this question. So just what you have to do is simply apply on the right property at the right time. Then by simplifying that, and you can see managing all around, you will get the required solution, right? So here what you have done is simply, if I just recall what we have done, if you just not got, that means सबसे पहली चीज हमने यहाँ पे क्या की थी, that मुझे पता था कि इस diagonal AC के ऊपर दो triangles बन रहे थे, that is ACX and ACY, which are lying between same parallels and are on the same base. Then we know that this property will tell us that both the triangles will have same area. So you can see ACX and ACY are equal in area. That's, we have given the first equation. Then again you will find out that AX as the base. यहाँ पे आपको दो triangles दिखेंगे, ADX and ACX, right? So ADX is equal to ACX. That form second equation. Now from both first and second equation, you will find out that both ADX and ACY are equal to the same triangle, that is ACX, right? So that means they are also going to be equal to each other. So that means from first and second equation we will get that ACY is equal to ADX, right? And this is what we have to prove in this question, right? So remember the properties that will lead you to the solution. So that was all in this question. So students, अब बढ़ते हैं next question की तरफ. Now you can see question number 14 here is that in this given figure AP is parallel to BQ, parallel to CR. यानी कि यहाँ पे ये जो तीनों line segments हैं AP, BQ and CR are parallel to each other, right? So ये जो तीनों line segments हैं ये एक दूसरे के क्या है, parallel है, right? Now we have to prove that the area of triangle AQC, you can see here AQC is equal to the area of triangle PBR. This is what we have to prove in this question, right? So हम कैसे ये prove करेंगे that AQC is equal to PBR? Let me just start off that सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, let me just write down the solution here. So अगर मैं बात करूं area of triangle AQC की, right? So अगर आप ध्यान से देखिए इस AQC को मैं दो triangles के सम में लिख सकता हूं, that is AQB plus BQC, right? So let me just write down that AQC is equal to area of triangle AQB plus, you can see, area of triangle, let me just write that, BQC, right? So AQB plus BQC, इसमें लिख सकता हूं AQB को. So let me just give it equation number first. Now similarly अगर मैं बात करूं PBR की, so area of triangle PBR को मैं कैसे लिख सकता हूं? You can see PBR को मैं ऐसे लिख सकता हूं PBQ plus QBR, right? So that will be equal to area of triangle PBQ plus area of triangle QBR. So let me just give it equation number second. अब ये दोनों equations के बाद मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखाना चाहता हूं that these two triangles, you can see BAQ and BPQ, both are on the same base and between same parallels, right? So उनका एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा. So now in figure you can see triangle ABQ and you can see PBQ are on same base
you can see that is BQ, and between same parallels that are AP and BQ. As it is given that AP is parallel to BQ, you can see here. So that means that area of triangle ABQ is equal to area of triangle PBQ, right? So अगर आप ध्यान से देखें, अब यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया कि ABQ का एरिया जो है वो किसके इक्वल है, PBQ के, राइट? सो अगर आप चाहे तो ABQ बोल लीजिए या AQB, दैट विल मेक नो चेंज, राइट? सो अगर आप चाहे तो यहाँ पे AQB भी लिख सकते हैं, दैट विल simply resembles you with this triangle written here, right? So AQB, that will make no change into this. ये same है, आप देख सकते हैं. अगर मैं इसको ABQ लिखता हूँ और इसको AQB, that will create a little tension in your mind. So that means मैं यहाँ पे इस ABQ को AQB लिख लेता हूँ, right? So AQB and PBQ are equal, right? So let me just tell you again that further. अगर आप ध्यान से देखें इसको, अगर मैं थर्ड इक्वेशन दे दूं, सो यहाँ पे अगर मैं AQB की जगह क्या लिख दूंगा, PBQ लिख दूंगा. नाउ लेट मी जस्ट टॉक अबाउट दिस BQC, राइट? सो अगर आप ध्यान से देखें तो BQ एंड C और ये BQ एंड R, ये दोनों ट्राइंगल्स जो है सेम बेस पे हैं एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, राइट? सो इनका एरिया भी क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल. सो फॉर दैट लेट मी जस्ट मेक सम स्पेस अबव. So now you can see again, I have seen that the triangles, you can see BQC and BQR, or you can say BCQ and BRQ, whatever you call it. Now for no reasons of error here, I am just talking about BQC and BQR. Both are on the same base BQ and between same parallels, right? So as triangles BQC and triangle BQR lie on same base, that is BQ, and between same parallels that are BQ and you can see CR. It was given all the three line segments are parallel to each other. So आप देख सकते हैं BQ CR के पैरेलल है और ये जो दोनों ट्राइंगल्स है सेम बेस BQ पे बन रहे हैं. दैट मींस इन दोनों का एरिया का जो है इक्वल. सो दैट मींस एरिया ऑफ BQC इज इक्वल टू एरिया ऑफ BQR, राइट? लेट मी जस्ट गिव इट इक्वेशन नंबर 4. अब आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड और फोर्थ में से मैं AQB और BQC को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 1 पे. सो आप देख सकते हैं AQB को मैं क्या लिख सकता हूं, PBQ. सो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, PBQ. देन BQC को मैं क्या लिख सकता हूं, BQR. तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, BQR. और यू कैन ऑल्सो से दैट QBR. सो डोंट गेट कंफ्यूज क्योंकि यहाँ पे QBR लिखा हुआ मैंने. सो BQR एंड QBR सेम, राइट? जस्ट द यू कैन सी लेटर्स arrangement as different, right? So you can see BQR or QBR can be written as same. So substituting equation number third and fourth in equation number first, right? So let me just make some space here. So what should I erase so that no problem can occur? So that will be, you can see, let me just rub this upside down here, right? So I'm just erasing it, the upper area. So you will find out then, substituting equation number, you can see 3 and 4 in equation number first, right? So that will give you that. Let me just write down in the lower side. So you can see अगर मैं यहाँ पे क्या बन जाएगा equation number first, that is area AQC is equal to, you can see, area of AQB की जगह मैं क्या लिख दूंगा, PBQ, right? So that will be PBQ plus BQC की जगह मैं क्या लिख दूंगा, you can see QBR, right? So area QBR. Now let me just give it equation number 5. So अगर आप इस equation number 5 और second को compare करेंगे, so you will find out that their right hand side is equal, right? So आप देख सकते हैं इनकी right hand side क्या आपस में equal है. That means left hand side भी क्या हो जाएगी, equal हो जाएगी. So from equation number, you can see 5th and second, we have, that means area of, you can see
AQC is going to be equal to area of PBR. So area of AQC is going to be equal to the area of PBR. And this is what has been required in this question to be proved here. So you can see this is how you have to solve such type of questions. So students, अब बढ़ते हैं next question की तरफ, that is question number 15 here, right? So question number 15 के अंदर आपको एक figure given है. Now in this figure you can see that diagonal AC and BD of quadrilateral ABCD intersect at O in such a way that area of triangle AOD is equal to area of triangle BOC, right? So आपको यहाँ पे एक quadrilateral given है ABCD. And in this quadrilateral ABCD, you will find out two diagonals AC and BD which intersect at point O in such a way कि ये जो AOD triangle है इसका एरिया जो है वो BOC के equal है, right? So ये given है हमें. Now we have to prove that ABCD is a trapezium, right? So हमें पता है कि trapezium की property क्या होती है कि one pair of opposite sides is parallel, right? Whether the other pair is non-parallel, right? So हम यहाँ पे क्या प्रूव करेंगे कि ये जो AB साइड है वो किसके पैरेलल है, CD के, right? It is looking that these two sides are parallel, but we have to prove that AB is parallel to CD such that ABCD is a trapezium, because हमें पता है कि trapezium की प्रॉपर्टी है कि opposite side, एक pair of opposite side क्या होती है, parallel, whether the other pair is non-parallel. So you can see here that AD is not parallel to BC. That means we have to prove that AB is parallel to CD. But how? You can see starting off my solution here. So as you can see, it is given that area of triangle AOD is equal to area of triangle BOC, right? ये हमें given है that AOD is equal to BOC. Let me just draw this line. अब अगर मैं इन दोनों triangles के अंदर ये common triangle जोड़ दूं, that is COD. So let me just add area of triangle COD on both sides of equation, right? So what I will get adding COD on both sides, so area of AOD plus area of COD equal to area of BOC plus area of COD, right? So आप देख सकते हैं मैंने दोनों तरफ क्या जोड़ दिया, COD जोड़ दिया. Now you can see AOD plus COD, AOD plus COD, that will form ACD, right? So that will form area of triangle ACD equal to, now you can see BOC plus COD, so you can see BOC plus COD, that will be BDC or BCD, right? So that will be BCD. Now you can see as we have got ACD and BCD triangles area equal here, right? Now what is above, you can see how we will now prove that from this that ABCD is a trapezium. I have told you we have to prove that AB is parallel to CD. Now अगर आप ध्यान से देखिए दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल है. अब हम एक्चुअल में एरिया कैलकुलेट कैसे करते हैं ट्रायंगल का. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैन बी कैलकुलेटेड बाय हाफ इनटू बेस इनटू द कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट और ऑल्टीट्यूड, राइट? सो यहाँ पे अगर बात करता हूं मैं इस ACD ट्रायंगल की, सो यहाँ पे मैंने एक कंस्ट्रक्शन की है. यू कैन सी दिस इज AL विच इज परपेंडिकुलर टू DC एंड अगेन BM परपेंडिकुलर टू DC. So you can write down in the starting about the construction. I forgot to tell you that construction here is that draw AL and you can see BM perpendicular to DC, right? So this is the construction that should have been written in the starting of this question. So आप देख सकते हैं अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं तो इसके लिए हाइट क्या है ये और बेस क्या है DC, राइट? सो आप देख सकते हैं इसको मैं क्या लिखूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD इज हाफ इनटू बेस क्या है आपके पास DC इनटू हाइट क्या है इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग AL. सो इस ट्राइंगल की हाइट क्या है AL. सो दिस इज द कॉरेस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड. अगेन नाउ टॉकिंग अबाउट BCD, सो इसके लिए हाइट कौन सी होगी BM एंड द बेस इज अगेन DC. सो हाफ इनटू बेस विच इज DC एंड हाइट विच इज BM. नाउ यहां पे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि कभी भी जो अगर दो पैरेलल साइड्स होती हैं तो उसके बीच की जो लेंथ होती है, डिफरेंस होता है, वो हमेशा सेम रहता है. अगर आपने ट्रेन ट्रैक देखा हो तो उसके बीच की जो लाइंस होती हैं वो सेम लेंथ की लकड़ियां होती हैं. यू कैन सी बिकॉज रेल ट्रैक्स आर पैरेलल टू ईच अदर, राइट? सो हर जो बीच में लकड़ी लगेगी उसकी लेंथ जो होगी वो क्या होगी,
सेम होगी, दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि अगर दो लाइंस के बीच की लेंथ सेम है तो वो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होगी, ऑब्वियस है, क्योंकि अगर ये सेम लेंथ की लाइन है बीच में तो ये दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, राइट। सो टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग, अगर आप ध्यान से देखें, ये हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, डीसी से डीसी कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ गया, दैट एल इज इक्वल टू बीएम, राइट। सो हमारे पास ये आ चुका है कि एल और बीएम आपस में इक्वल है, दैट मीन्स कि ये जो ए बी और सी डी है इनकी ये आपस में क्या होंगी, पैरेलल होगी, क्योंकि तभी इनके बीच का डिस्टेंस सेम हो सकता है। दैट मीन्स अगर ए एल बी एम के इक्वल है, दैट मीन्स ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल होगा। सो दिस इंप्लाइज दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी, राइट। दैट इज, यू कैन सी, अब हमने यहां प्रूव कर दिया कि ए बी पैरेलल है सी डी के, दैट मीन्स ए बी सी डी क्या है, एक पैरेलल ट्रेपेजियम है, सॉरी, राइट। सो ए बी सी डी is a trapezium, right? So quite easy, just you have to simply prove that AB is parallel to CD like this, right? So that was all in this question. So students, अब बढ़ते हैं next question की तरफ, that is question number 16, right? So let me just explain you that in this given figure, it is given that area of DRC, you can see DRC is given equal to area of DPC, right? So यहाँ पे given है कि DRC triangle का एरिया जो है वो DPC के इक्वल है, and you can see also area of BDP. Let me just mark that. So BDP is equal to ARC, this triangle, right? So these two triangles are also equal in area. So this is given in the question. Now we have to show that both the quadrilaters ABCD and DCPR are trapezium. So हमें प्रूव करना है कि ये जो दोनों क्वाड्रिलेटर्स हैं ये क्या है, ट्रेपेजियम है। अगेन वी नो दैट कि ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हमने यहाँ पे ए बी को डीसी के पैरेलल प्रूव कर दिया, देन दिस एबीसीडी क्वाड्रिलेटर कैन बी कॉल्ड एज ट्रेपेजियम, एंड अगर डीसी को आरपी के पैरेलल प्रूव कर दिया, देन डीसीपीआर विल अगेन बी अ ट्रेपेजियम। सो हमें यहाँ पे ऑल एंड ऑल प्रूव ये करना है कि AB इज पैरेलल टू DC एंड DC इज पैरेलल टू RP, so that ABCD and DCPR are trapeziums, right? So starting off my solution here, so the first thing that is given here, let me just write that area of DRC is given equal to the area of DPC, right? So let me just write down like DPC equal to DRC. I will tell you why I am writing just reverse of this. But that will make no change क्योंकि DPC और DRC आपस में इक्वल है, so whatever you can write first and last, right? So this is equation number first. Let me just write down that area of BDP is equal to area of ARC, right? So that is equation number second. Now let me just tell you, अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे कि BDP, where is BDP? You can see BDP में से अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं, DPC को सब्ट्रैक्ट कर दूं, so you can see BDP में से DPC सब्ट्रैक्ट करूंगा तो बचेगा क्या आपके पास, BDC, राइट। सो फर्दर यू कैन सी यहाँ पे राइट हैंड साइड में भी अगर मैं ARC, यू कैन सी ARC दिस ट्राइंगल में से अगर मैं DRC माइनस कर दूं, सो ARC में से DRC माइनस करूंगा तो ADC बचेगा। नाउ दैट मीन्स कि ADC जो है वो BDC के इक्वल आ जाएगा। नाउ वी नो दैट these two triangles having equal area and lie on the same base DC, that means they are going to be lying in the same parallel lines, right? So यहां से हमारे पास निकल आएगा कि AB जो है वो DC के पैरेलल है, बिकॉज ये प्रॉपर्टी है ट्राइंगल्स की। सो डूइंग द सेम हियर, आई एम गोइंग टू सबट्रैक्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, राइट। सो दैट मीन्स क्या करूंगा मैं, एरिया ऑफ BDP माइनस एरिया ऑफ DPC ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। सिमिलरली यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ARC में से क्या माइनस कर दूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल DRC, राइट। सो लाइक दिस। सो आप देख सकते हैं BDP में से अगर मैं DPC माइनस करूं, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, BDP में से अगर मैं DPC माइनस करूं तो BDC बचेगा, राइट। सो दैट विल बी, यू कैन सी एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC इज गोइंग टू बी इक्वल टू, आप देख सकते हैं ARC में से अगर DRC निकालूंगा तो ADC बचेगा, और यू कैन से ACD, राइट, व्हाटएवर यू कॉल इट। सो आप देख सकते हैं ये ADC और BDC जो है वो आपस में एरिया में इक्वल है, एंड वी नो दैट यू कैन सी triangles on same base, let me just correct that,
same base and having equal area are lying between same parallels, right? So that means कि ये AB जो है वो CD के क्या हो जाएगी, CD के parallel. So we can say that ABCD is a trapezium, right? And this is what we require here. So यहाँ पे first thing that ABCD is a trapezium, ये हमने prove कर दिया. Now doing the same thing with DCPR, how we will prove it? We have to prove DC parallel to PR. So now as we have to prove this DCPR a trapezium, that means we have to prove that DC is parallel to PR. How we will do this? Let me just take this equation number first. So आप देख सकते हैं area of DPC is equal to area of DRC, that is given. That means DRC is equal to DPC. अब इन दोनों ट्रायंगल्स में आपको एक बीच में एक ट्रायंगल नजर आएगा, that is DLC. मैंने यहाँ पे इस पॉइंट को क्या नाम दिया है? L दिया है. You can give it in construction here. So let me just tell you कि अगर मैं इस DLC को दोनों ट्रायंगल्स में से माइनस कर दूंगा, आप देख सकते हैं इस ट्रायंगल में से अगर मैं ये हटा दूं तो ये बचेगा, और इस ट्रायंगल में से अगर मैं ये हटा दूं तो ये वाला ट्रायंगल बचेगा. That means they will then get equal in area, right? So doing the first step here, that you can see subtracting area DLC from both sides of equation number first, right? So आपके पास क्या आ जाएगा? Let me just tell you that area of DPC minus area of DLC, and on the same thing right hand side there will be DRC minus DLC, right? So DPC minus DLC, आप देख सकते हैं DPC minus DLC, that is CLP, right? So area CLP is going to be equal to, you can see DLR, right? So अब आपके पास क्या आ गया? CLP is equal to DLR. अब अगर आप ध्यान से देखें ये दोनों ट्रायंगल में अगर मैं ये जोड़ दूं कॉमन चीज, that is RLP, so आपके पास ये दो ट्रायंगल आ जाएंगे. So that means ये दो ट्रायंगल अगर इक्वल एरिया के हैं और सेम बेस पे हैं, that means ये भी क्या होंगे? फिर सेम पैरेलल्स के बीच में लाई करेंगे. Then we will get the required solution that DC is parallel to RP, so that we can say that DCPR is a trapezium. So doing the same, quite easy. Just what you have to do here is simply you have to add here. You can see. So what you have to add here is, so add, you can see area of RLP on both sides. So that will give you, you can see area of CLP plus area of RLP is going to be equal to, you can see area of DLR plus you can see area of RLP. Obviously the CLP plus RLP, you can see, let me just mark that. So CLP plus RLP, that is CRP. That will form CRP, and you can see DLR plus you can see RLP, that will form DPR. So that will be DPR. Now you can see DPR and you can see, then you can see CRP. Both are also lying on the same base. Also you can say, let me just write that, DPR, let me just again correct that. So DPR and you can see CRP lie on same base. So आप देख सकते हैं जिसका एरिया भी इक्वल है और lying on the same base, they are also lying on the same parallel. So this implies, you can see that DC is going to be parallel to RP. You can write down the reasons that the you can see triangles lying on the same base and having equal area lie between same parallels. You can write that in the bracket, right? Now as DC is parallel to RP, that is, we can say that one pair is parallel, that means DCPR is a trapezium, and this is the end to this question, right? So we have come to an end to this exercise as well as this chapter. So that was all in this question.